Hello and Assalamualaikum guys. In this video we're going to be doing Learning Effects of Force Part 4. अभी तक हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया बिसाइड्स these two सब टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में करेंगे सेंटर ऑफ मास स्लैश ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So yeah, let's get into it. Center of mass or center of gravity is the point from which the whole mass slash weight appears to act. For a regularly shaped object, the center of mass slash gravity is in the geometric center. First of all, आप मुझे ये बताएं, ये जो हमारे सामने rectangle है, is this a regularly shaped object? Yes, it is. And as per the description, for a regularly shaped object, the center of mass slash gravity is in the geometric center. यानी कि this is the center of mass या center of gravity. First part पे आ जाते हैं. The first statement says the point from which the whole mass slash weight appears to act is the center of mass. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमारे पास एक बेड था. इस बेड का जो वेट है, वेट इज इट एक्टिंग फ्रॉम, किस पॉइंट से ये एक्ट कर रहा है? द वेट ऑफ द बेड एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट. ये पॉइंट इस बेड का सेंटर ऑफ मास है और इस पॉइंट से हमारा वेट एक्ट कर रहा है. ऑल राइट. सो फॉर दिस रेक्टेंगल, इस पॉइंट से डाउनवर्ड्स हमारा वेट एक्ट करेगा. समझ आ गई? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि लेट्स से मेरे पास ये एक पिवट है और मैंने इस पिवट के ऊपर इस रेक्टेंगल को ऐसे बैलेंस करना है कि ना ही ये रेक्टेंगल क्लॉकवाइज जाए, ना ही ये रेक्टेंगल एंटी क्लॉकवाइज जाए. सो वेयर शुड आई प्लेस द पिवट? शुड आई प्लेस द पिवट हियर? शुड आई प्लेस द पिवट हियर? और शुड आई प्लेस द पिवट right beneath the center of mass? Most of the people instinctively आप लोगों ने यही सोचा होगा कि हम इसको सेंटर ऑफ मास के नीचे रख देंगे, यानी कि इक्वली टू द लेफ्ट एंड टू द राइट अगर हम इसको रख देंगे देन इट विल बैलेंस. और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है. जितना इसका मास इधर है उतना ही इसका मास इधर भी है. दैट्स व्हाई देयर इज नो क्लॉकवाइज एंड देयर इज नो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, अगर आपके पास एक नई पेंसिल है एंड यू ट्राई टू बैलेंस इट ऑन योर फिंगर, आप क्या ढूंढते हो? सबसे पहले आप सबसे पहले उसका मिड पॉइंट ढूंढते हो, राइट? ताकि जितना मास इधर है, जितना वेट इधर है, उतना ही वेट इस तरफ को भी हो एंड इट बैलेंसेस आउट. समझ आ गई? इसके पीछे हमारे पास एक और रीजनिंग ये भी है कि मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दिस सिनेरियो फोर्स तो हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ वेट, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इट इज जीरो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लेते हैं इट इज फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इन दिस सिनेरियो दे आर बोथ इंटरसेक्टिंग, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज 0 मीटर्स. समझ आ गई? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं पिवट इधर रख दूं, अब तो हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब आपको क्या लगता है कि वेयर विल द ब्लॉक मूव? विल इट मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और विल इट मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ऑफ कोर्स इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज अब हमारा वेट की वजह से एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास वेट भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है एंड वी कैन इजीली गेट द मोमेंट. एंड अगेन सिमिलर सिनेरियो अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूं, again we have a distance, we have a perpendicular distance and we have a weight. तो अब भी एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं और आपने शायद ये नोटिस किया हो, इन दिस ट्रायंगल द सेंटर ऑफ मास is quite low. Why is that? That is because most of the mass is in the lower half. ऊपर काफी कम मास है. और आपने ये भी याद रखना है
कि जहां ज्यादा मास होगा उधर ही हमारा सेंटर ऑफ मास जाएगा। समझ आ गई? फॉर दिस डायमंड इट इज इन द डेड सेंटर, for this parallelogram again in the dead center, for the circle again in the geometrical center, and same for the square. आगे हम इसकी एक पास्ट पेपर एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेज इनटू मोमेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने याद रखना है that the mass of the beaker and its contents are 410 grams. The center of mass of a meter rule is at the 50 centimeter mark. Part 1. State what is meant by center of mass. हमने ऊपर ये पढ़ा था, it is the point from which the whole mass slash weight appears to act. So yeah, you can write that there. Part 2, this is the main part. The meter rule is placed on a pivot. The tip of the pivot is under the 80 centimeter mark on the rule. The beaker with its contents is then placed at different positions along the rule until the rule is balanced. Figure 1.1 shows the arrangement with the rule balanced. तो यहाँ हमने एक beaker रख दिया, and because meter rule का अपना भी mass है, it is creating a anti-clockwise moment while this beaker is creating a clockwise moment. समझ आ गई? One side of the beaker is at the 84 centimeter mark and the other side is at the 92 centimeter mark. Calculate the mass of the rule. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बीकर है इसका सेंटर ऑफ मास किधर है। यू डोंट हैव टू बी दैट प्रिसाइज, आपने बस एक तुक्का मारना है। सो आई वुड गेस इट इज समवेयर अराउंड हियर, राइट? जितना इधर को मास है उतना ही इधर को भी मास है, जितना ऊपर को मास है उतना ही नीचे को भी मास है। समझ आ गई? And now where is the center of mass of the ruler? It is in the geometric center. समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला यूज करना है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। F1 B1 is equals to F2 B2. स्टेप 1 ये था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिवट, ठीक है ना? पिवट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द रूलर, एक फोर्स ये लग रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द बीकर। दो फोर्सेस निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप ये था, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द रूलर विल बी दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और इधर से ही वेट एक्ट करेगा। सो इट इज आई थिंक 80 minus 50, that is 30 centimeters. F1 into 30 is equals to F2। हमारे पास बीकर का मास क्या था? बीकर का मास हमारे पास था 410 ग्राम। 410 ग्राम से पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? इनटू द वेट। 410 into 10, that will be 4.1 न्यूटन्स। समझ आ गई? तो ये हमारे पास फोर्स है और 4.1 न्यूटन्स। And now the tricky part is, what is the distance from the pivot to the line of action of force? हमने ये determine किया था that the line of action of force will always act from the center of mass. इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? इसका सेंटर ऑफ मास है 84 एंड 92 के बीच में। 84 और 92 के बीच में, यानी कि एट दिस पॉइंट। अगर हमने इसको निकालना है, वी जस्ट हैव टू गेट द एवरेज ऑफ दीस टू। एवरेज ऑफ 92 plus 84, 84 plus 92 is, I believe, actually let's just take out the calculator. All right, so 92 plus 84 divided by 2 will be the midpoint, यानी कि this point, and that is 88. Now you can convert these into meters, यानी कि F1 into 0.3 is equals to 4.1,
इंटू 0.88। समझ आ गई? लेकिन हम 0.88 डायरेक्टली नहीं लेंगे। What we will do is subtract 0.88 from the 80 centimeter mark. 80 centimeter mark पे तो हमारा पिवट है, right? 80 centimeter mark पे हमारा पिवट है। 88 minus 80 will be this distance from the pivot to the beacon. समझ आ गई? So 0.88 minus 0.8 will be F1 into 0.3 is equals to 4.1 into 0.08. समझ आ गई? Now let's calculate the force. All right. 4.1 into 0.08 divided by 0.3, and that is 1.1, approximately 1.1 newtons. जब हमने वेट को मास में कन्वर्ट करना होता है, व्हाट डू वी डू? W is equals to mg. वेट को हमने मास में कन्वर्ट करना है, 1.1 divided by 10, that will be the mass, and I believe it is 0.1 kilograms. And let's check the marking scheme. ये हमारे पास आ जाती है marking scheme, and it is 0.11 kilograms. So yeah, we're correct. All right. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 14. Figure 1.1 shows a painter standing on a wooden plank directly above the right hand support. तो ये हमारे पास right hand support है, and the painter is standing right above it. The plank has a length of 3.6 meters, width of 0.35 meters, and a thickness of 0.025 meters. The gravitational field strength, G, is 10 newtons per kilogram, and the mass of the plank is 23 kilograms. A. The center of mass of the plank is in the middle of the plank at a distance of 1.3 meters from each of the support. Calculate the weight of the plank. Weight हमने निकालना है simple, 23 into 10, 230 newtons. How? Weight is equals to what? mg. W is equals to mg. ये हमारे पास mass है, हमारे पास gravitational field strength है. If we multiply the two, we get the weight. So yeah, 230 newtons. आगे 2. The moment of the plank about the right hand support. ये हमारे पास right hand support है. Right hand support के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, तो बंदा कोई भी मोमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि इट इज स्टैंडिंग ऑन द पिवट. If they were asking about the left hand support, maybe we could consider that some sort of moment, but they're asking for the right hand support, और right hand support के बिल्कुल ऊपर बंदा खड़ा हुआ है. Therefore there is zero perpendicular distance from the pivot to the weight of the person. So हमारा जो moment होगा produced by this about the right hand support, it will be zero. लेकिन जो मोमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट, यानी कि कंसिडरिंग दिस द पिवट, वो हम कर सकते हैं ऑफ द प्लैंक. उन्होंने हमें ये बताया द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक इज इन द मिडल ऑफ द प्लैंक, यानी कि राइट हियर इज द सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहां से हम एक वेट का वेक्टर बना लेते हैं. वेट इज एक्टिंग फ्रॉम हियर. समझ आ गई? एंड इट इज अबाउट 1.3 meters away from the pivot. अगर हमने राइट हैंड सपोर्ट को पिवट बना के मोमेंट निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल. वी यूज द फॉर्मूला मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स हमारे पास क्या था? फोर्स हमारे पास था 230 न्यूटन्स बिकॉज दैट इज द वेट ऑफ द प्लैंक. 230 multiplied by the perpendicular distance. Perpendicular distance हमारे पास क्या है? It is from the weight to the pivot, which is 1.3 meters. 1.3 meters, and that is about 299 Newton meters. So yeah, 300 Newton meters. समझ आ गई?
सो या दैट वर द क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ उनका एस्पेक्ट बताया कि इस एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इधर इधर भी यूज हो सकती है। आगे हम चलते हैं इस पार्ट को। लेट्स जस्ट इग्नोर इट, राइट? इट्स नॉट दैट नेसेसरी फॉर यू टू नो अबाउट। अच्छा, how to determine the center of mass slash gravity of an irregularly shaped lamina। लामिना हमारे पास ये irregularly shaped है, आप देख सकते हैं इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। जैसे हमारे पास रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक यू नो a rectangle or something, a triangle. A lamina is not like that. A lamina is irregularly shaped. और अगर हमने इसका center of mass या center of gravity निकालना है, we have to follow these steps। सबसे पहले मेक थ्री होल्स नियर द एजेस ऑफ द लैमिना। जैसे हमने यहाँ तीन होल्स बना दिए, वी हैव टू डू दैट। हैंग द लैमिना थ्रू वन ऑफ द होल्स ऑन द पिन। यहाँ हमारे पास एक पिन है, हमने लैमिना को इस होल से क्या किया, हमने इसको टांग दिया, हमने इसको हैंग कर दिया। नाउ हैंग अ प्लम लाइन इन फ्रंट ऑफ द लैमिना ऑन द पिन। तो हमारे पास बेसिकली ये एक प्लम लाइन है, हमने इसी लैमिना के सामने इस प्लम लाइन को टांग दिया। और ये जो प्लम लाइन है, ऑफ कोर्स इट विल गो डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स क्योंकि द वेट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। तो हमारे पास एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बन जाती है डाउनवर्ड्स। वेयर एवर द प्लम लाइन सेटल्स, ड्रॉ अ लाइन अलोंग दैट। तो यहाँ अगर हमने लैमिना को प्लेस किया है और प्लम लाइन हमने उसके बाद प्लेस कर दी है ऑन द सेम पेन, अगर ये लाइन बन रही है, वी जस्ट ड्रॉ अ लाइन along that, what do you call it, the string or whatever. Four, wherever the okay, fine. Repeat this process for the remaining holes। अगर हम इन तीनों holes के लिए ये process कर लेते हैं, what will happen is that हमारे पास तीन lines आ जाएंगी that will be intersecting each other। और ये जो intersection होगा, this will be the center of gravity। Let me repeat that। Make three holes near the edges of the lamina। हमने तीन होल बना लिए। तीन होल के बाद hang the lamina through वन ऑफ द होल्स ऑन द पेन। पहले हमने ए, फिर बी, फिर सी से हमने टांग दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हैंग अ प्लम लाइन इन फ्रंट ऑफ द लैमिना ऑन द पेन। तो हमने प्लम लाइन हैंग कर दिया। प्लम लाइन एक सीधी लाइन बनाएगी थ्रू द स्ट्रिंग, क्योंकि द प्लम इज बीइंग पुल्ड बाय द ग्रेविटी, तो इट विल बी स्ट्रेट। फोर, वेयर एवर द प्लम लाइन सेटल्स, ड्रॉ अ लाइन अलोंग दैट। जैसे अगर प्लम लाइन हैज सेटल्ड हियर, हम एक लाइन इधर बना देंगे। यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ऑल थ्री होल्स। और जब हमारे पास एक इंटरसेक्शन आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, तो दिस विल बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई? So yeah, let's move on। That wasn't that hard, and it's not that important either। Stability of an object. It is the ability of an object to maintain its original position after a disturbance। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको using this example। आपने ये इन्फ्लेटेबल टॉय कभी ना कभी तो देखा ही होगा। Like no matter how hard you punch it, it always gets back up। Why? Because it is extremely stable। राइट? क्योंकि हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये इसकी ओरिजिनल स्टैंडिंग पोजीशन है आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड। अगर आप इसको पंच करोगे, इट विल गेट बैक अप बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल। दैट इज व्हाई यू कॉल अ पर्सन इमोशनली स्टेबल, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम, दे ऑलवेज गेट बैक अप। समझ आई? ऑलराइट। स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। बेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कितना एरिया वो चीज कवर कर रही है, एंड वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास किधर है, इफ इट इज लो और हाई, दैट इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आई? इन दिस केस आई assume that the center of mass is pretty low, that is why it always gets back up। Let's find out। All right। तो यहाँ हमारे पास वेरियस एग्जांपल्स हैं। फर्स्टली आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ लाइट लैम्प। लाइट लैम्प जो हमारी होती है, इट कवर्स एज मच एरिया एज पॉसिबल टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल। क्योंकि इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा भी इसको पुश मिल गया, इट विल फॉल डाउन, अगर इफ इट वाज नॉट स्टेबल, राइट? और जितना लो एक चीज का
सेंटर ऑफ मास होता है उतना ही ज्यादा उस चीज का क्या होता है, उतना ही ज्यादा उस चीज की स्टेबिलिटी होती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो हमारे पास लैंप है, इसका जो बॉटम है इट इज मेड आउट ऑफ वुड। ये उन्होंने वुड का इसलिए बनाया हुआ है ताकि जो मास है वो नीचे की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो। एंड एज वी ऑल नो, जहां मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसी जगह के आसपास हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पाया जाता है। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी इज द ओनली रीजन हमारे पास अभी भी 4,500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं। लाइक द पिरामिड्स आर 4,500 years old and they're still standing. Why? Because जो पिरामिड्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज वेरी वेरी लो एंड दे कवर अ वेरी वेरी लार्ज सरफेस एरिया। आई विल रिपीट दैट वंस अगेन। जो पिरामिड्स हैं दे आर वेरी वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उनकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत लो होती है और उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा हायर होता है। दैट इज व्हाई pyramids are such stable objects, such stable shapes. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है विच इज हॉरिजॉन्टल और हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है विच इज वर्टिकल। विच वन ऑफ द बुक इज इजियर टू टॉपल? अगर मैं इस बुक को गिराना चाहूं, will it be easier for me to turn this book or will it be easier for me to turn this book? Most of the people will say it is easier for me to turn this book क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा ऊपर है। That's the technical reason. Why is it easier to turn this book? Because इसका center of mass ज्यादा ऊपर है। But on the same hand, अगर मैंने इसको rotate करना, इसको turn करना, it will take me a lot more force, a lot more power. Why? Because इसका center of mass नीचे है और इसका जो surface area वो काफी ज्यादा है, इसका surface area काफी कम है। Going back to the surface area, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक पड़ा हुआ है, let's say a sphere. ये स्फीयर हमारे पास पड़ा हुआ है। ये जो सरफेस एरिया टच कर रहा है विद द ग्राउंड इट इज वेरी 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 स्मॉल। तो अगर आप इसके ऊपर वेरी मिनिमम फोर्स भी लगाते हो, इट विल रोटेट, इट विल टर्न, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हम इसको वन ऑफ द कॉर्नर्स पे इसके खड़ा करने की कोशिश करें, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू दैट, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप इसको इसके कॉर्नर पे नहीं खड़ा कर सकते। वाई? बिकॉज जब आप इसको इसके कॉर्नर पे खड़ा करते हो, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास काफी ऊपर चला जाता है और इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, इसका सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है। तो यू हैव टू टेक बोथ ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड। आप एक को छोड़ नहीं सकते, आप एक को इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप देम बोथ इन योर माइंड। कमिंग बैक टू द स्टेबल स्ट्रक्चर्स, हमारे पास जो जो भी स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो शेप है इट काइंड ऑफ रिजेंबल्स द शेप ऑफ द पिरामिड्स टू सम एक्सटेंट। जैसे आप ये बुर्ज खलीफा देख सकते हो, इट लुक्स लाइक एन आइसोसेलेस। एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट विल स्टिल बी प्रीटी लो क्योंकि मोस्ट ऑफ द मास इज लोकेटेड इन दीज पार्ट्स। जब ज्यादा मास इस तरफ को होगा, जब ज्यादा मास इस तरफ को कॉन्सेंट्रेटेड होगा, what will happen is that the center of mass will lower. I am guessing somewhere around here or here. पिरामिड्स के बाद जो नेक्स्ट टॉलेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, दैट वाज द आईफिल टावर। पिरामिड्स आर आई बिलीव 150 meters tall। जो आईफिल टावर है इट इज 300 meters tall। इसको हम एक स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते, बिल्डिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, राइट? यू कैन नॉट लिव इन इट, बट there are compartments and there are rooms in the pyramids which you can live in. So yeah, आप देख सकते हैं इट ऑल्सो हैज अ शेप जिसमें हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारा ज्यादातर मास है वो इस तरफ को लोकेटेड है, इन द बेस, राइट? दैट्स व्हाई यू कॉल इट अ बेस बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ द होल ऑपरेशन। होपफुली अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट फैक्टर्स द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। अब हम चलते हैं ऑन टू सम क्वेश्चंस। लेट्स सी। Question number 11. Four solid objects are made from the same material and have equal volumes. इनका जो वॉल्यूम है it is the same for all four options और इनका जो मटेरियल है it is also the same, यानी कि इन सबका मास भी सेम है।
which object is the most stable? हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेबल इट हैज टू चेक टू क्राइटेरियाज. उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट हैज टू बी लो, एंड सेकेंडली उसका जो सरफेस एरिया इट हैज टू बी मैक्सिमम. एंड द ओनली वैलिड ऑप्शन आई सी इज डी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास भी काफी लो है, क्योंकि जो मास कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे की तरफ है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी सबसे ज्यादा हाई है. देयरफॉर डी इज द राइट आंसर. अब कोई और क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं. Alright, question number 22. Four objects of equal mass rest on a table. The center of mass of each object is labeled G. Which object is the least stable? Again, stability is dependent on two things. One is the surface area, the second is the center of mass. For an object to be stable, the center of mass has to be low. For an object to be unstable, the center of mass has to be high. Therefore, B is the right answer. Because it is the least stable object, और इसका जो surface area वो भी काफी low है. The surface area is quite less compared to the other options. So B is the right answer. It is the least stable option. आगे एक और क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं. Let's see. Question number 29. Four table lamps are shown along with the position M of the center of mass in each case. Which lamp is the most stable? सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कौन सा लैंप है which is covering the most amount of surface area and has the lowest center of mass. Has the lowest center of mass. This one is the least stable, this one is the most stable. समझ आ गई, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास काफी लो है. आगे चलते हैं. ये आखिरी क्वेश्चन है जो हमने करना है, which is question number 31. When a car turns a corner at speed, it risks toppling over. Two factors affecting the stability of a car are the height of its center of mass and the distance between its front wheels. Which factors make the car more stable? Again, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ. लेट्स से ये हमारे पास गाड़ी है. बना लेते हैं इसको इधर. ये हमारे पास गाड़ी है और ये इसके पहिए हैं. जितना लो इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास होगा उतनी ही स्टेबल ये गाड़ी होगी. दैट्स व्हाई हमारे पास जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं दे आर वेरी लो टू द ग्राउंड, राइट, क्योंकि दे नीड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट. लेकिन जो हमारे ट्रक्स होते हैं उनके जो सेंटर ऑफ मास होता है वो काफी हाई अप होता है, एंड दैट इज व्हाई आप देखते हैं कि दे जस्ट फ्लिप ओवर, राइट. सो या, वन ऑप्शन इज दैट द सेंटर ऑफ मास हैज टू बी लो. अच्छा, जो सेकंड है इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स अस्यूम कि ये हमारे पास तीन टायर्स हैं. ये चार टायर्स हैं. अगर टायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इंक्रीजेस, जो बेस है ऑफ द कार इट इंक्रीजेस एज वेल, राइट. द बेस एरिया ऑफ द कार इट इंक्रीजेस एज वेल, एंड दैट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार. अगर आप इनको आसपास कर दोगे, अगर आप इन टायर्स को पास पास कर दोगे, व्हाट विल हैपन इज दैट आप इसका बेस एरिया कम कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग द स्टेबिलिटी. दैट इज वाई आपके पास जो डब्बा गाड़ियां होती हैं लाइक वैगन आर और ऑल्टो, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो काफी हाई होता है और उनके जो बेस एरिया होता है वो काफी लो होता है. सो यू रन अ रिस्क ऑफ फ्लिपिंग देम ओवर, राइट. आपने ज्यादातर जो गाड़ियां देखी होंगी विच फ्लिप ओवर विल बी ये जो डब्बा गाड़ियां होती हैं, राइट, जिनका सेंटर ऑफ मास काफी ऊपर होता है. सो या, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. सेंटर ऑफ मास लो, डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स large. ठीक है ना. So yeah, D is the right answer and that is it for the video. Thank you for watching. अगर आपने enjoy किया है, like make sure to leave a like, and अगर आपने नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, go pray and like मेरे लिए भी दुआ करना. Thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.